हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आशिमा। लेट्स स्टार्ट एपिसोड नंबर 64। इस एपिसोड में कोई आपको अपने फैशन फंडेज बताएगा तो कोई एक्टर अब बन गया है होस्ट। हर एक्टर का अपना एक अलग ही स्टाइल होता है और अगर टीवी इंडस्ट्री में किसी एक्टर से स्टाइल की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सौभाग्यवती भवा की विराज यानी कि करणवीर बोरा का। तो चलिए चलकर जानते हैं करण से उनके फैशन फंडास और साथ ही में करण आपको ये भी बताएंगे कि बचपन में वो कितने स्टाइलिश थे। हाय, दिस इज करणवीर बोहरा और आज हम आपको दिखाएंगे हमारे स्टाइल फंडेज क्या है। ऑलराइट, सो आर यू रेडी फॉर a good style check? To be cool you have to actually believe you're cool. That's चाहे आप चप्पल में रहो, चाहे आप जीन्स, चड्डी, टी शर्ट, कुछ भी, anything. You got to feel you're cool. You can't say कि मैं ये पहनूंगा तो और कूल लगूंगा। कभी मुझे 1 घंटा 2.5 घंटे लगते तैयार होने, कभी मुझे 10 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। Most important thing for me is my hair. Okay? मैं चाहे मेकअप ना करूँ आप देख रहे हैं कि मेरा हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, you can see the products that I have. So it's very important for me to get my hair in order. क्योंकि कहते हैं ना, बाल आपके सर का ताज होता है, तो ताज को मेंटेन करने के लिए एकदम to feel like you're a king, you need to do your hair. तो सबसे पहले मैं अपने बाल को सेट करता हूँ। आधा फोल्ड तो आप देख ही रहे हैं कि आधे बालों से छिप जाता है, बट या और उससे अगर ज़्यादा कुछ हो तो चश्मा पहन लेता हूँ। उसके बाद तो फिर तो गुंजाइश ही नहीं है मेकअप की। There is one person who I really feel is very cool without doing anything is सलमान भाई। उनका मुझे इतना why I love him so much is because he doesn't need, he's exactly like what I would tell people that आपको believe करना होता है that you're cool, you're stylish, you're the best. As much as I love a lot of these actresses, you know, for their performances, for their talent, they all look generic. They all look the same hairstyle, the same makeup, the same clothes. I mean, I don't know anyone who's looked any different. What is bold? Just by dropping or shedding clothes does not mean bold, you know. In fact, I feel कि हमारी जो पुरानी actresses थी, they were stylish. मतलब black and white फिल्मों में भी they used to dress up so much. They used to take care of their makeup. Even I'm talking about 60s, 50s, 60s, 70s. मतलब तब की बात जब nobody knew what style means, you know. Oh man, there is Vaijanti Mala, there is Vaida ji. There is Helen Auntie, man, she is the goddess, really. I mean, you know, आप उनकी एक-एक फिल्में, उनकी एक-एक scene उठा लो, and you see the intricacies they've had. Forget the intricacies, the courage they've had that time. अब के दौर में कौन है? There's nobody. You know, I don't see anybody. टीवी इंडस्ट्री में, according to you, अंडा, a big अंडा। मैं कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो, you sleep less. But you need to look good because आप जो दिखते हो वही लोगों को नजर आता है। I mean, and एक तो I hate people go to Lokhandwala and they buy Lokhandwala clothes and they feel they're very cool. Oh. I'm specifically talking about actors. I don't consider myself very stylish. मैं कुछ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता हूँ मेरे कपड़ों वपड़ों पे, and I don't think that I'm anything apart from anybody else. But I've always believed, even when I was small, even when I was not, जब भी मैं ना टीवी में था ना फिल्मों में था, अगर मैं आपको मेरी पुरानी फोटोग्राफ दिखाता हूँ, you will be shocked the kind of clothes I used to wear even then. मतलब when I was small, my mom used to dress, she used to love dressing me up. तो I used to like 80s में, you know, वो माइकल जैक्सन का ज़माना था. You had to see the clothes she would get for me. So I think मेरी जो वो जो trait है of dressing up has come because of my mom, because she used to experiment on me. As a kid, I used to wear bell bottoms. I used to wear like really outrageous. मतलब मेरे कॉलेज में खिताब और मेरे पास अभी भी है, दिया गया था Mr. Radical, the guy who can do anything. You know, so I used to consider myself, बहुत मैं गर्व महसूस करता था कि जो मैं करता हूँ कोई भी नहीं करता है। मैंने जो कोई भी शो किया है, be it शरारत, be it कसौटी, be it just मोहब्बत when it had come, or be it सौभाग्यवती भवा, always अगर production पैसा नहीं डालेगा, because they have a specific amount of budgeting for clothes, I'll get my own clothes. I've always done that, be it just mohabbat, shararat. Then from Kasauti onwards, when TJ came into my life, it was completely her idea that let this guy be a completely hip hop, completely, you know, a guy who's, because उसका वो किरदार था कि he's come down from the US, and we did a lot of research कि ठीक है, अगर एक US से बंदा आता है वो कैसा होगा, वो लेदर जैकेट, लेदर जीन्स और लेदर पैंट के टाइप नहीं होगा, you know, like how generally we have that's how we describe a rich spoiled brat कि वो ऐसा होगा, and I hate that word rich spoiled brat, but that's how we describe. So we did a lot of research and we realized that, you know what, right now in America the big trend is like loose pants, loose jeans, hooded stuff,
chains, blings, and everything. So we got that trend in India, and it worked really big time. अब सौभाग्यवती के टाइम का था तो we said okay अब क्या करें? You can't do the same thing. Also one very important thing is that you cannot repeat. See, if you're stylish, you cannot repeat your style. So मुझे वही डर था कि अब क्या करें. So I mean I still don't know how the dress senses, but ऐसी कुछ छोटी चीजें होती है which I try to incorporate. Like for example, I've just started wearing these 2 watches. I think it's pretty cool. Okay, I could look stupid also. I could wear 3 watches and look stupid, but I'm wearing 2 watches, which I feel is cool. Another thing is, look at my jeans, my pants. Now if you realize, they're very tapered. They're called a cigarette fit. पहले के टाइम में John Travolta बहुत पहनते थे. Okay, he used to wear in the movie Grease, he used to wear cigarette fit pants. I added something like this out here. If you observed, okay, these are just not just zips. They're just to put your pocket in. Just look cool. Glares, I'm very brand conscious. I have 3-4 pairs of glares. I wear these Ray-Ban. Now most of the pairs are gifted by my friends and some I buy. But again, they should suit your face. Glares में ऐसा नहीं कि आप brand conscious हो. They need to suit your face. I believe glares should suit your face. So, I like this. Whenever I wear these glares, it's important for me to just get my hair out. I just like dressing up. That's the bottom line. There are some people who don't like to dress up, but the people who do, people who think they're stylish, they need to up their quotients of stylishness. Try to stay fit, because on a good body, any kind of clothes look good. If you don't have a good body, you carry a good attitude. Because I know a lot of people, I know a lot of friends who like a little on the plumpier side, but they're so cool. I mean, मैं देखता हूँ ना वो जो पहनते, they care rat's ass, but they're cool. They feel they're cool. अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक्टर टर्न होस्ट अर्जुन बिजलानी से, जिनकी एक्टिंग को आप लोगों ने ऑलरेडी ही अप्रिशिएट किया है. लेफ्ट राइट लेफ्ट, मिले जब हम तुम और पर्दे से मिला कोई अपना में. तो चलिए चलकर जानते हैं अर्जुन से एज अ होस्ट वो इस बार क्या नया करने वाले हैं. I think I'm hosting a show for UTV Bindas, which is Del Inspiron Road Diaries. Apart from hosting this show, I'm going to be hosting a lot of shows for them because I'm officially a VJ now for UTV Bindas. The best thing is कि अब लोग मुझे पहले जैसे मयंक कहते थे, आलेख कहते थे, और कुछ लोग अर्जुन भी कहते थे. अब सभी लोग अर्जुन कहेंगे. काफी सारे, जैसे आप सब बहुत बिजी हो काम करने में, हम सभी. First I was offered this show and then they offered me to like be a VJ, probably, I don't know, hosting one particular show. But I don't know, probably they liked me and they thought that I could be a VJ for them. And I personally, when I started off, आप किसी को पता नहीं है ये बात कि मैंने काफ़ी टाइम पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो मैं हमेशा देखता था VJs को और मुझे लगता था कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ. लेकिन किस्मत उस टाइम मतलब वो कहते हैं ना कि मेरी किस्मत में कुछ और लिखा था. सो आई वाज डूइंग टेलीविजन सोप्स, जिसमें भी मुझे काफ़ी लोगों ने प्यार दिया, सराहा, और लेफ्ट राइट लेफ्ट किया, मिले जब हम तुम किया, काफ़ी सारे शोज़ किया. एंड नाउ आई एम डूइंग समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट. वेरी फ्यू एक्टर्स गेट एन अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली डू डिफरेंट थिंग्स. टच वुड, आई हैव बिन लकी इन दोज टर्म्स कि मुझे हर टाइम कुछ अलग करने को मिलता है. जैसे अभी मैं इतने टाइम से काम नहीं कर रहा था बिकॉज मैं वेट कर रहा था कि कुछ तो यूथ से रिलेटेड हो. दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई आई एम डूइंग दिस शो, इज़ बिकॉज आई एम गोइंग टू बी कनेक्टेड टू माई ऑडियंस and people who like me for so many years and who've made me a television star. So I want to be connected to them. When I was a kid, I used to always watch Cyrus Brocha and मैं मतलब सब वो मुझे बहुत funny लगता था. And I used to think his sense of humor is really good. And there are a lot of I think Nikhil is good. तो मैं इनको बचपन में देखता था. And today I'm a VJ, so I think it's time for me that कुछ साल बाद लोग शायद मेरे बारे में ऐसी बात है. You're a VJ, you have to be yourself basically. You're yourself, obviously एक शो को होस्ट करने के टाइम आपको एक certain brief दिया जाता है, but usually you're yourself. You talk the way you want. कोई स्क्रिप्ट नहीं होती खासकर, मतलब कोई ऐसी डेफिनेट स्क्रिप्ट नहीं होती, just pointers होते हैं. And so it's fun because you're not doing some drama, you're not doing those things. और मैं वो कर चुका हूँ, so I know how it is. That is also fun, but वो एक अलग चीज़ ही है altogether, television. And I wanted to do something on the reality front. And being a VJ, I think, is one of the coolest things. All good things come to an end. And Mayank was a character. जब show खत्म हो गया, तो obviously there's no more of Mayank seen on television. But memories, like I said, वो हमेशा रहती है लोगों के दिल में.
And I today also when people come up to me and they say कि आपका मिले जब हम तुम शो में आप बहुत अच्छे लगते थे, आप बहुत स्वीट हो या बहुत जैसे भी हो, तो I enjoy the adulation and I like it कि लोगों ने मेरे कैरेक्टर्स को भी पसंद किया and I want them to also know a different side of me now. Now I've signed up with Bindas and I'm a VJ for them. So depend करता है अभी, it's not like I cannot do a show or something like ऐसा कुछ है नहीं. बट अगर आएगा तो शायद मैं कर लूँ. इंडिया फोरम्स के सभी फैंस को मैं कहना चाहूँगा कि हियर आई एम इन अ डिफरेंट अवतार एंड टिल नाउ यू ऑल हैव गिवन मी ऑल द लव एंड अफेक्शन एंड आई होप कि यू लाइक आवर शो डेल इंस्पिरॉन रोड डायरीज एंड आई एम गोइंग टू बी होस्टिंग इट. So it's nice, it's fun, it's nice because for you all are young and I'm sure you all want to go on road trips and see what all happens on a road trip, and you all can see me what I'm going to be doing on a road trip because I'm excited myself because I'm be traveling so many different destinations and इंडिया में रहकर मैं शायद इंडिया के इतने destinations पे आज तक खुद नहीं गया हूँ, तो I'm really kicked about it कि शायद most of India मैं cover कर रहा हूँ. So it's an experience which I'm also going to bring back home apart from the other 5 people. किसी बात पर खुश होना और किसी बात पर गुस्सा आना, ये जिंदगी के दो पहलू हैं. एक आता है तो एक जाता है. तो चलिए चलकर जानते हैं आपके चहेते सितारों से किस बात पर होते हैं वो सबसे ज्यादा खुश और किस बात पर आता है उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा. नफरत है मुझे झूठ से. Irresponsibility, forgetful nature and not being disciplined. These are the 3 things that really get me angry. एक्चुअली बोलूँ थोड़ा सा डिप्लोमेटिक लगेगा बट मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद हैं. जो लोग मुझे लगता है कि बहुत सीधे मेरी तरह सिंपल लोग हैं, उनको देख के मुझे बहुत खुशी होती है. I think lack of professionalism at times makes me really angry. Lack of focus and late Latifi मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. These things make me a little angry. I continuously and constantly thrive for perfection. So I think somewhere down the line I am a little criticizing nature, you know. So I think at times lack of perfection makes me a little irritated. I wouldn't say angry but irritated. मैं बातें करके बहुत खुश होती हूँ. मुझसे कोई भी बात कर लेना मतलब मैं बहुत खुश होती हूँ. I feel very happy when I make new friends, when I talk, when I socialize basically. जो लोग झूठे होते हैं, वो लोग जो लोग अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, जो लोग मक्कारी करते हैं काम में, वो जो लोग हिपोक्रेट्स होते हैं, वो लोग मुझे बहुत गुस्सा दिलाते हैं. I hate people who lie. I can't stand them. I hate diplomacy in any kind of relationship, be it your parents, be it your family, be it your friends, especially in friends. I don't like being double standards. जो भी है मुँह पे बोलो, you fight, they are your friends, they're always going to be fighting with you. Who else are you going to fight with? But I always believe in the concept of sorting it out because I can't live when I know the opposite person is not talking to me. So I always believing in sorting it out, and then you choose your way. Okay, things work out. She's your friend. She's a friend. Still be friends. If not, then just at least your mind is clear. Thirdly, I don't like a lot of show off. I hate people who show off. I can understand your dad has a lot of money. I understand you have a lot of money, but please stop showing it to other people. They are really not interested. मैं भी उसको कहना चाहूँगी, don't lie. Okay, just don't lie. Hips don't lie, so you don't lie. So lame, मम्मी. हम पहले भी आपको ऐसे कई सारे एक्टर से मिलवा चुके हैं जिन्होंने आपको बताया कि अगर वो एक्टर नहीं होते तो क्या होते. अब हम आपको मिलवाएंगे आपकी गीत यानी कि दृष्टि धामी से, जो आपको बताएंगे अगर वो एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या होती. मैं लेजी लंप होती, मैं सिर्फ घर पे बैठती और शॉपिंग करती. No, honestly, if not into acting, I would have either been in the field of dance or I would have been a stylist. I would love to learn dancing from Remo. I think Dance India Dance में जितने भी उसके contestants हैं जिन्होंने perform किया है, I think they are all wonderful acts, especially the कोलावारी डी जो एक बार perform किया था. आप YouTube पे जाके check कर सकते हैं. Oh my God, what a performance! I think he's by far somebody who I would love to learn dancing from. Not anybody in particular. I like every bits and pieces from everywhere. But yeah, I think I like one out of the lot would be Manish Malhotra. And Western, I don't know, maybe Valentino or something. I think me, honestly, because I don't really like a lot of dressing of other people. Second would be Sue, who used to play Dr. Anjali in Dil Mil Gaye, males Karan.
Karan Grover. I think he's he dresses up really well, and I think Tacker. आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस एपिसोड के बाद आप करणवीर वोरा के फैशन फंडा जरूर आजमाएंगे। इस एपिसोड के कमेंट्स एंड फीडबैक देना मत भूलिएगा @WhatsAppTV@IndiaRaj.com पर। Till then, take care and goodbye. Statement of the century, I would say, is don't think you are, know you are. All I want to say to all of y'all is I love y'all.